webinar platform and also all the people who have joined me in social media platforms. I hope you guys are doing good. अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो just give me a thumbs up or send me some reaction so that I can get motivated to initiate my conversation. Lovely. Thank you. Thank you so much for your time. And I really appreciate you guys joining me for this 45 minutes session where I'm going to discuss a very important topic. I think this topic is very close to my heart because whatever I am today, it is because of my belief that if you want to become successful as a trader in your life, then you need to do this, which I'm going to discuss. Before I start, I want to ask a very simple question to all of you, and you can please reply as per your comfort. My question is, how many of you love stock market or financial market? How many of you love financial market? And your reply should have lots of love. Oh wow, that's nice. A lot of people love stock market. And how many of you are passionate about stock market? You believe that there is a very different experience of being part of stock market. Many of you, fantastic. So I want to start by a small thought which Sadhguru, his video, gave me a couple of years ago. It was a very simple thought, but very impactful thought. The thought was, our body has three layers. Layer one is the skin, which is the physical layer. Layer two is the energy, which is basically if I am communicating with you, I am transferring my energy from myself to you. There is a energy layer, and each one of us have unique energy. And the third layer is the layer of bliss, where there is there is something, but we can't feel it, but that sense of bliss help us to connect with other things. You can call it love, passion, or anything which resides on the layer of bliss. Let me warn you, if you want to be successful as a trader, as an investor, or in anything in your life, you will have to connect your blissful layer with that aspect of your life. If you are not, you will not succeed because the world is full of people. India is full of people. We can see many people want to be successful, but only few people become successful because those people who become successful, they don't react, act, or think from their physical body. They've actually moved beyond the physical body and gone into the zone of blissful layer. तो why I'm saying this to you, क्यों ये random सी open ended बातें मैंने चालू कर दी? Because ट्रेडिंग जो है ना, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो सबको करना है, but successful बहुत ही कम लोग होते हैं. Even the data says that 89% people are losing money in derivatives, right? 70% people are losing money doing intraday in cash market. But then we should also consider the fact that there is 11% population who are making money as traders. And who are those guys? Those are the people who are beyond their body, who are connected with the market beyond their senses, eyes, ear. They are beyond that. तो वो जोन में आने के लिए एक अलग लेवल का एफर्ट, एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए. And if you have joined me today to learn this whole science of making money in all market condition, I think you have taken the first step. पहला कदम आपने रख लिया in finding that mojo for yourself, finding that path for yourself for success in stock market as a trader. So today's topic is very important, very close to my heart, is how to become a trader, successful trader in any market condition. चलिए मार्केट कंडीशंस को पहले डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, मार्केट कंडीशन तो बहुत ही सिंपल है.
एक फ्लैट मार्केट, अप ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, तीन ही तो मार्केट कंडीशंस होते हैं ना. रेंज बाउंड मार्केट विच इज फ्लैट मार्केट, तेजी का मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट, एंड डाउन ट्रेंडिंग मतलब गिरता हुआ बाजार. कैसे हो सकता है कि हम तीनों मार्केट कंडीशन में पैसा बनाएं? हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, बट बहुत पावरफुल आंसर है. इसको मैं दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. फर्स्ट, इन एनी मार्केट कंडीशन there is an opportunity, or reverse is also valid, there is an opportunity in any market condition. ये दो अलग अलग बातें हैं. Okay, remember this. In any market condition there is an opportunity, and there is an opportunity in any market condition. ये दोनों को हम डिस्क्राइब करेंगे. दूसरा, whoever you are, whatever you are doing, there is, because you are there in the market, your understanding of the market has a clear cause and effect relationship. What is trading? Trading is when you know that ये हुआ इसके कारण ये होगा, and you are the first one to react to it. Say company's result came, it was a good result or a bad result. Whoever is fastest to judge whether it is a good result or a bad result will obviously create better alpha. Yes or no? Suppose US non-farm payroll data came. Whoever is the fastest to comprehend the impact of that data on market condition will obviously have an edge on other people, right? So when I'm talking about any market condition, there is an opportunity. I'm saying that in the world, there are multiple assets. There is commodity, there is currency, there is equity, there is bond market. At any market condition, there will be some market which will be uptrending, some market which will be downtrending, some market will be range bound. I hope you're understanding what I'm saying. The moment you have holistic understanding about all markets, and obviously if you have a better access to all markets, there is a high chance that you will have an edge over other people. बरोबर है? ये पहला वाला पॉइंट हुआ, that in any market condition there is an opportunity, and there is an opportunity in any market condition. हमेशा remember this. तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट फ्लैट हो गया, मार्केट रेंज बाउंड हो गया, हाई रे पैसा कैसे बनेगा. पैसा स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में हर समय बन सकता है. At any point of time you can make money in market. You need to be slightly smarter than other normal people who are probably not able to make so much money that you can visualize you can make money. The second, cause and effect. If you have a holistic understanding about all assets, typically assets are interrelated. तो एग्जाम्पल के रूप में gold prices went up. Say the cause is something else, but one immediate reaction, gold prices went up. That means the companies which are listed in US, which owns gold mines, their stock price will go up. For example, crude oil went up. Now who will get the benefit? Crude went up. If you can predict crude going up, hooray, fantastic. But there will be companies who will get benefit, the upstream companies who will get benefit of better realization if crude prices go up. Correct? For example, rupee depreciated from 83, it went to 84, 85. The effect of that cause will be on both export and import companies. अगर रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो इट इज गुड फॉर द एक्सपोर्ट कंपनीज and it is bad for the import companies. That means if you understand the relationship, the cause and effect, you can have an edge over other people. When I started my career in 2006, I started as a commodity analyst. In fact, I started in 2005 formally. Before that, before MBA, also after my CA, I was trading, but I call it a playground. It was a warm up for me.
But the real career started in 2005. And when I started that career, I started with commodity analysis because I used to love gold, I used to love crude oil. I used to be fascinated with this whole thought process of understanding the global economics and figuring out the impact of global economic variables on financial assets. कि यूएस का पेरोल डेटा आ रहा है, लंदन मेटल एक्सचेंज का इन्वेंट्री डेटा आ रहा है, कॉपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है. मुझे बहुत मजा आता था, मुझे गुदगुदी होती थी. मुझे, क्योंकि मैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल में बैठा करता था और आज भी मेरे पास में ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, उसमें 8 स्क्रीन है. और मैं आई फील अ सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस व्हेन आई, देखो मुझे एक पावर दिखता है इसके अंदर में. मेरे मेरे चारों तरफ अगर डेटा रहता है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है. राइट, ये मेरा करेक्टर था, मुझे मजा आता था डेटा के साथ में. अब आप देखिए, जब आप एक कैरेक्टर के होते हैं, देन यू ऑब्वियसली ट्राइंग टू अलाइन योर करियर अराउंड दैट कैरेक्टर, इजंट इट? तो मैंने ट्रेडिंग ट्रेडिंग मैंने क्यों किया मैं बाद में बताता हूँ, बट मैंने एनालिसिस करियर इसलिए चालू किया था बिकॉज आई बिलीव दैट आई लव डेटा एंड आई कैन figure out the correlationship between X and Y and Z, and so on. I used to predict crude oil, gold, and my accuracy used to be quite high. Then in 2006, January, I decided to quit my job in Mumbai and I came back to Calcutta. And I started trading with a capital of 10 lakh. 10 लाख का मैंने अपने आप को कैपिटल दिया कि 10 लाख रुपए अगर डूब जाएगा तो मैं वापस बॉम्बे चला जाऊंगा जॉब करने. 10 लाख का मेरा स्टॉप लॉस था. For first 6 months, even with the accuracy of, even with a high accuracy of predicting the movement in crude oil and gold, I was still not making money. I lost 2.5 lakh in first 6 months. आप imagine करिए, highly qualified person leaving Mumbai, coming back to Calcutta, and with a lot of you know uh, fiction from father who wanted me to be there in Bombay and grow as a fund manager. I came back because I believed in trading as an occupation, and then for 6 months I was literally broken. 2.5 लाख रुपए मेरे लग चुके थे, 7.5 लाख रुपए बचा था, और मुझे घबराहट हो रही थी. मोर देन एनीथिंग एल्स, आई वाज ऑलमोस्ट रेडी टू गेट मैरिड एंड नो वन वाज विलिंग टू गेट देयर डॉटर मैरिड टू मी. तो ये सिचुएशन थी मेरी. उस सिचुएशन पे मैंने अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखा. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा. जब दुनिया में इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स बने, जैक शॉगर की बुक्स पढ़ता था, तो वहां पर उनके इंटरव्यूज इतने सारे ट्रेडर्स की पढ़ता था, यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, समय लगेगा बट हो जाएगा मुझसे. तो कन्विक्शन, कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गॉट वन ट्रेड इन नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट which gave me 25 lakh profit. And that not just gave me profit, it gave me that much needed confidence inside me कि मुझसे हो जाएगा. The moment you arrive at that confidence कि मुझसे हो जाएगा, that means you are settled. So I made 25 lakh and I immediately did one thing. I committed a Bloomberg terminal to myself, which was 1.25 lakh a month terminal. It's a very comprehensive terminal. And because I used Bloomberg in Mumbai with JM Financial, I knew that without Bloomberg, I cannot become big in this domain. So I subscribed. I committed 2 years. Bloomberg 2 साल का कमिटमेंट लेता था, अभी भी लेता है. तो मैंने अपने 25 लाख को वहां कमिट कर दिए. ये एक डिफरेंशिएटर था कि मैंने कभी भी अपने आप को पेड रिसोर्स में कमिट करने में हिचक नहीं लाई. टिपिकली पीपल हैव दिस हैबिट कि ये फ्री में मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, वहां पर मिल रहा है. आई वाज ऑलवेज वेरी कि यार फ्री रिसोर्सेज से दूर रहना, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव क्वेश्चंस फॉर एनी फ्री थिंग अवेलेबल एवरीवेयर. ओके, now that Bloomberg decision was turning point of my career, and from there on I started building the trading desk. I started recruiting people, and I built with my brothers. I built one of the largest trading desks in India with 300 traders in Calcutta. We are one of the largest in Calcutta for sure. Then 2009 it happened. NSC announced a co-location facility where if you are an algo trading firm,
you can apply for a co-location. You can apply for a co-location, and they will give you a server infrastructure. Just before, uh, I'll tell you the reason why I'm talking about these things with you. Not that I'm trying to uh, say that यार मैं कितना महान हूँ, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया. Idea is not to make you feel that मैं महान हूँ. The idea is to make you believe that अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन there are certain things which is required. Okay. So this is the I hope you can see the screen. This is the website, and this is the traders. We have one of the largest trading desk in India. और कैलकाटा के अंदर में हम लोग हैं, तो कोई भी अगर कभी कैलकाटा में हो, कुछ भी अगर मिलना हो तो हैप्पी. You can see this video about us. We are good in what we are doing. Okay. Then we decided that we will launch an algo trading firm, and we launched in 2010 iRage, which is one of the largest algo trading firm in India, where we trade we trade algos, we trade uh, high frequency trading, we do low frequency trading. I mean, if you can see, there are all my partners are IITM graduates, and I'm one of the partners in the company. So that is something which I started in 2010. Okay, and still we are there. So इससे एक सीख मिलती है कि मार्केट इवॉल्व होता है, मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज आती है, एंड इफ यू आर नॉट देयर इन कैपिटलाइजिंग ऑन दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज, you will miss a major opportunity to make big money for yourself. So हमेशा नए अपॉर्चुनिटी, नए मार्केट को एम्ब्रेस करना चाहिए और अपने आप को अपस्किल करना चाहिए. और अपस्किल आज की दुनिया में अपस्किल करना एकदम टफ नहीं है. We have internet which is giving us a lot of content. We have a lot of structured training modules which is helping us go through that exercise of systematic learning. Okay. So ये करियर चलता रहा. फिर 2013 के अंदर में I decided that enough is enough. Now I also want to add value to society, and that's where we launched Elearnmarkets.com, which is one of the top education platform in India. और वहाँ हमने बहुत सारे courses launch किए, और these are the courses by real people. Like, we are the real traders, real people, and I always believe that learning from real people doesn't go in vain. You will always find some value in that learning. And we launched a couple of programs. Right now, we have this amazing program called Trading Mentorship Program. And I call it a program which will help people to become lion. It's an only program in India with 5 mentors. In fact, in the world, is the only program with 5 mentors. And I would definitely love to talk to you about this program. But before that, let me just continue the journey. So stockage, Elon markets, and so on, and so far everything is fine. So all seasoned trader, yeah, a trader who can trade in all market conditions, उसका classic आपको example देता हूँ. ठीक है, ये मैं अपने सारे YouTube videos में भी बोलता हूँ that this is Nifty and this is dollar index. Okay, look at the way dollar index has fallen from 104 level. This was the classic day when dollar index fell and Nifty also fell, which is an aberration. ऐसा नहीं होना चाहिए. और डॉलर इंडेक्स क्यों गिर रहा था? बिकॉज यूएस का यील्ड कब गिर रहा था. यूएस का यील्ड कब जब गिरता है, ब्याज दर जब गिरते हैं, तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है, एंड देन टिपिकली इक्विटी मार्केट्स गो अप. दैट्स अ सेट standard template. But that day, it was not working that way. It fell. The stock Nifty took a support at around 21-day moving average, stayed there, and then started going up. Whereas dollar index from 104, it went down to 101. Because of my deep understanding of this multi-asset relationship. And it is very, very useful to have a multi-asset relationship. See, we are not here, at least I'm not here to build a short-term career कि मैं Thursday expiry strategy सीखूं. वो बहुत temporary है. The moment I learn the entire multi-asset working in any market condition,
I can emerge as a winner in any market condition. लोग अभी बोल रहे हैं ना कि ऑप्शंस के अंदर में सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्या करें कैसे होगा करियर कैसे होगा मुझे अभी चिंता नहीं हुई मैं तो 19 साल से लगा हुआ हूँ आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी मार्केट कंडीशन बिकॉज आई नो इफ माई बेस इज स्ट्रांग अगर मेरा बुर्ज खलीफा का बेस स्ट्रांग है ना तो मैं मल्टीपल बुर्ज खलीफा बना लूंगा एक टूट भी जाएगा तो उसके ऊपर भी मैं खड़ा कर लूंगा बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द strength, the base homework which I've done for myself. So understanding of multiple asset is very, very important. Now, can I trade all the assets together? Should I? This could be a classic question by some of you that, sir, मैं multi asset trader बन के सारे asset को trade करूं? My answer is no. You cannot trade all assets in one go, at least when you start your career. It will take you 5 years to become a successful and consistent multi asset trader. It took me almost 3 to 4 years. For some people, it can be lesser also if you are much more intelligent than me, which I'm sure some of you are. But it will take you on an average 5 years to become a multi asset trader, and it will need capital. आप 2 लाख 3 लाख रुपए से मल्टीपल एसेट नहीं ट्रेड कर सकते आपको मिनिमम 25 लाख रुपए चाहिए होंगे इफ यू वांट टू बिकम मल्टी एसेट ट्रेडर बट you can't get 25 lakh from day one. You have to build yourself. So when you start, you take one asset, trade that, develop an expertise, then move to the other asset which is related to the first asset. जैसे मैंने कमोडिटी किया उसके बाद मैंने करेंसी किया बिकॉज ये दोनों बहुत रिलेटेड है फिर उसके बाद मैंने इक्विटी किया और अब मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ फिर धीरे धीरे मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैंने अपने करियर को पेस किया है ताकि as I'm growing old, as my capital base is growing, as my organization is growing, I am sure that my market participation is in sync to my circumstances in my life. 2013 में जब Almighty God blessed me with twin boys, I decided that I cannot live the life from morning 9 to midnight 12 and trading. I need to become a passive trader. That's where my journey of identifying a passive swing strategy started. That's why I read a lot of books. In fact, one of the book which I read and I've been reading regularly is this book called Dual Momentum Investing by Gary Antonelli. This book, this probably I must have read at least 4 to 5 times. It's a very statistically very oriented books on understanding how momentum works. And I read this book. I read a lot of thesis paper before I decided that yes, मेरे को momentum investing करना है, मुझे swing trading करना है. And from swing trading, I became a momentum investor. और अब धीरे धीरे मैं अपने value investing की तरफ move कर रहा हूँ. तो multi asset trading leading me to become a value investor or a serious investor. तो ये तो एक जर्नी है जो मैंने अपने लाइफ में शेप अप कर लिया बाय गॉड्स ग्रेस मैंने नहीं किया God has been very kind market has been very kind that market has blessed me to live that life right if you want to live a successful trading life let me warn you that it is not as easy as it was when I started. I started in my journey in an era where there was no algo, price inefficiency was higher, and I could make money easier because 2006 में algo trading नहीं था 2008 के एंड में 2009 में algo trading इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे लिए रिलेटिवली ईजियर था कि मैं पैसा बना पाया अपने लिए बेस बना पाया अभी जो आ रहे हैं उनके लिए रिलेटिवली टफ है but with every tougher market condition, there is opportunity also because the more players are there, the more people who are losing side are also there. So you can actually, if you have a better knowledge edge, you can actually beat those people who are even on the losing side. So अब आपके ऊपर है कि आप कैसे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आप सीख के समझ के एक प्रॉपर मॉड्यूल के बाद पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या आप जस्ट एक यूट्यूब वीडियोस या जनरल ज्ञान लेके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं द चॉइस इज योर्स व्हाट यू वांट टू डू नाउ लेट मी ट्राई टू शिफ्ट द डिस्कशन टेंजेंट इनटू यू
अब आपके बारे में बात करते हैं। मेरे बारे में तो बात मैंने कर ली। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि यार ये अपनी बड़ाई खाली करता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ दैट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है वो इतनी ईज़ी नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, हमको थोड़ा-सा माइंडफुल होके काम करना है और बहुत सारा नॉलेज रख के काम करना है। ओके एंड इट्स अ कांस्टेंट जर्नी। ये बुक देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बुक हैज़ बीन रेड। और ट्रेडिंग ओरिएंटेड बुक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है बिकॉज़ एवरी टाइम यू रीड इट you find something new and exciting, especially traders like Mark Minervini. They write amazing books. Okay, अब आपके बारे में बात करते हैं। तो some people are full time traders, some people are part time traders. या some people are जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब एक ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन देख रहे हैं, क्या ट्रेडिंग वो ऑक्यूपेशन हो सकता है? ये कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है ट्रेडिंग कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, फुल टाइम कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का वैसा क्वेश्चन होगा। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि प्रॉब्ली दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द फेंस एंड फिगरिंग आउट कि यार लोग बात तो बहुत कर रहे हैं, मेरा नेबर बहुत पैसा बनाया है, क्या मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए? तो आप लोग के लिए मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू शुड हैव आंसर्स फ्रॉम दैट फ्रेमवर्क। आपको खुद वो आंसर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कितना समय है? हाउ मच टाइम डू यू हैव एवरी वीक? हाउ मच टाइम कैन यू गिव? कैन यू गिव 10 hours a week? आप आंसर कीजिए। If you can give 10 hours a week or more, thumbs up. If you can give less than 10 hours a week, thumbs down. Manjeet says, I can. Nihar says, and Sachin says, yes. My God, there are many, many people who can give 10 hours a week. Very passionate people. People who really believe that मुझसे हो पाएगा तो मैं समय दूंगा. Right. How many people can give only 2 hours a week? Only 2 hours a week. Raise your hand. Give me a thumbs up. Only 2 hours a week. Khali 2 hours a week. Okay. And how many people can give 25 hours a week? 25 घंटा मैं दे सकता हूँ हफ्ते का। मेरे को इतना ज्यादा शौक है ट्रेडिंग का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, मेनी मेनी पीपल 25 hours a week. ओके, अगर आप सिर्फ 2 hours a week दे सकते हैं, only 2 hours a week, then you can become a weekend trader. What is weekend trader? वीकेंड के अंदर में ट्रेड एनालिसिस करो, 2 घंटा बैठो, वीकली बेसिस पे चार्ट देखो, अपना दायरा को डिफाइन कर लो कि ये 50-100 स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट थीम जिसको मैं बिलोंग करता हूं। जैसे आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल हियर, let's go to a section called investment theme. Investment themes are the videos which I am recording, or maybe you can identify your own by reading a lot of books. Okay, so these are say investment themes. So this is a weekly chart, some fundamental data. This is RS, this is RSI. This is something which I teach to my students and to people who are following me on YouTube also. Let's take an example of this stock, Voipal, Elin, Dixon. All these are themes which played quite well and they are continuing to play well. So if I have only 2 hours in a week, I'll restrict myself to only stocks whose themes I am comfortable with. I hope you understood this. कि मैंने 100 स्टॉक का यूनिवर्स बना लिया और उसमें मैंने थीम्स डिफाइन कर लिया कि ये थीम के स्टॉक में मैं कंफर्टेबल हूं बिकॉज ये थीम मुझे समझ में आता है और इसमें अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम आएगा तो मुझे पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और इफ यू हैव 0 hour अवेलेबल पर वीक, आपके पास समय ही नहीं है, तब म्यूचुअल फंड में डालो या पीएमएस मैनेजर को दे दो, बट 2 घंटा वीक भी दोगे ना तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कन्विक्शन आपके अंदर में मैं डेवलप कर दूंगा। नॉलेज हमको पूरा रहना पड़ेगा। आई कांट जस्ट डू ट्रेडिंग लुकिंग एट द स्टॉक। मुझे डॉलर इंडेक्स, मुझे 10,000 फीट, वो कहते हैं ना 10,000 फीट से व्यू बनाओ, 1,000 फीट आ जाओ, 1,000 फीट का व्यू बनाओ, 100 फीट आ जाओ और फाइनली वो 1 फीट के ऊपर आ जाओ जहां पर जिस स्टॉक में आपको फोकस करना है। नंबर 2, 10 घंटे हैं मेरे पास में, विच इज अ वेरी गुड टाइम। I can probably become more active and do shorter swing trade. ये जैसे वीकली चार्ट है, इट्स फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड, बट अगर मैं 10 आवर दे सकता हूं तो मैं थोड़ा शॉर्टर स्विंग ट्रेड भी कर सकता हूं, लेकिन मैं डेरिवेटिव्स नहीं करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ओनली 10 hours a week yet you are trading derivatives?
झूठ मत बोलना, सच बोलना मेरे को। डॉक्टर, वकील और विवेक बजाज से झूठ नहीं बोलने का कभी। यस, आयुष, अनिल, आप लोग हैं खतरों के खिलाड़ी। आपके लिए मेरी ताली है। देखिए, पैसा आप बना रहे होंगे, आई कीप ऑन प्रेइंग दैट यू कीप ऑन मेकिंग मनी, बट आप खतरों के खिलाड़ी हैं। If you have only 10 hours a week and if you're trading derivatives, then you are stretching yourself. You are pushing yourself for something which is not desirable. You can still succeed. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेल हो जाएंगे. I will never wish for all of you who are attending today. My prayers will always be there that you become successful. You become part of that 11%. Because when I started this presentation, I told the fact that you have come today, that means you want to become that 11%. Okay? तो आप करेंगे, but आप खतरे के खिलाड़ी हैं. People who can give 15 hours, 20 hours, 25 hours, they should trade derivatives. Derivatives is nothing wrong with derivatives. By the way, tomorrow, आज मैंने ट्रेलर रिलीज किया है, बहुत ही अच्छा फेस टू फेस, प्लीज देखिएगा, धीरज भाई के साथ कल मैं रिलीज कर रहा हूं, जहां धीरज भाई जो 52 ईयर ओल्ड है, रिटायर्ड है, टॉप फर्म में वो सीईओ टाइप उस सीएक्सओ थे, and he decided to leave job and he is a trader, and he explained me the power of leverage. He told me that Vivek, leverage से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे को leverage से ही बड़ा पैसा बनता है, लेकिन leverage is a दो धारी तलवार, गला कट सकता है, one need to be very careful. So if you have more than 15 hours, 20 hours, 25 hours a week, then you can think about derivatives. Okay, so you have to ask yourself this question कि मेरे पास कितना समय है, दूसरा पैसा कितना है. हम सब करोड़पति अरबपति बनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा बेस कैपिटल कितना है ये भी तो देखना होगा. क्या 2 लाख रुपए से हम करोड़ों कमा लेंगे? कमाएंगे, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. क्या 20 लाख से हम करोड़ों कमाएंगे? कमा सकते हैं, बट इट विल टेक रिलेटिवली लेस टाइम. यू विल हैव टू रियली रियलिस्टिकली असेस योरसेल्फ. हम लोग को ना झूठी पढ़ाई या क्राउड में नहीं रहना चाहिए, हमको रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए. बिकॉज हमारा पड़ोसी की परिस्थिति हमें नहीं पता है, हम उसको देख तो रहे हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, बट वो उसने क्या रिस्क लिया उस पैसा कमाने के लिए, ये बात हमको पता ही नहीं है, या वो बताना नहीं चाहता है, या वो झूठ बोल रहा है. मेरा पड़ोसी मुझे काफी साल पहले बोला था कि मैं तो इतना शेयर खरीदा हूँ, इतना करोड़पति हो गया हूँ, बहुत मजा आ रहा है. तो मैंने उसको बोला था कि तू रहता तो अभी भी नॉर्थ कैलकाटा में है, तो अलीपुर शिफ्ट नहीं हुआ, तो पैसा कैसे बना रहा है, तो कहाँ से बना रहा है. तो पड़ोसियों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ट्रस्ट योर सेल्फ, फिगर आउट how much capital do you have and how much capital you are willing to lose if at all going at stuff. आपको कितना घबराहट होगी, अगर 10 लाख रुपए लग गए तो क्या घबराहट होगी, 20 लग गए, ये अपने आप से पूछेगा कि व्हाट इज माय टॉलरेंस लेवल इफ आई लूज मनी. If the tolerance level is less than 5 lakh, you'll have to think different way. If your tolerance level is around 10, 12, 15 lakh, the higher the tolerance level, there is a higher chance that you'll become successful as a trader. जिनके पास कम कैपिटल है वो मुझे गाली दे रहे होंगे कि सर ये क्या बात कर रहा है, ऐसे मत बोलिए, हम लोग को भी तो बड़ा होना है. एग्रीड है, बट छोटा कैपिटल वाला रिस्क ज्यादा लेता है, लेकिन उसका फेलियर होने का चांस बहुत हाई है. दिस इज रियलिटी है. आप 1 लाख 2 लाख का कैपिटल से अगर काम करेंगे तो वो चला ही जाने वाला है, उससे करोड़ों रुपए नहीं बनने वाले हैं. ओके, क्योंकि आप रिस्क अनरिजनेबल लेते हैं. एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको पैसा बहुत बनाना है, इसीलिए आप रिस्क अनरिजनेबल लेते हैं. ठीक है, तो पहला हो गया समय कितना दे सकते हैं, दूसरा रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ टॉलरेंस लेवल. ओके, थर्ड, ये जो the body, the structure which the God has given to us, we have unique DNA and we have a unique way of reacting to situations. Some of us are peace, calm, meditative. We are okay when going as stuff. We are okay when everything is fine, right? Because we have reached the level of control in our body. There are some people who are very reactive. उनको लॉस होने लग जाता है तो उनके हाथ में पानी आने लग जाता है. Have a realistic assessment of yourself, that what kind of personality you are, because that will decide what kind of trade you will do. So it's not just point number one, what is a return expectation. नहीं,
It is a combination of all three. Sorry, return expectation is obviously point number four. It is not just about one point, it's a combination of all these points which will help you to strategize. अगर 15% रिटर्न का काम करना है तो काम अलग है, 20% का अलग है, 25 का अलग है. हर रिटर्न का पॉसिबिलिटी शेयर बाजार में है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट. कि एक दिन में 100% रिटर्न जनरेट करना है वो भी कर सकते हो. उसके लिए अलग तरीके का होमवर्क करना होगा. अगर साल का 15% रिटर्न जनरेट करना है वो भी कर सकते हो. राइट. पॉइंट नंबर 5, रिटर्न की बात हमने कर ली, समय की बात कर ली, सब कुछ हमने बात कर लिया. लेकिन द फाइव पॉइंट नंबर 5 विच इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज अबाउट रोटी. ये रोटी की बात है ना. अल्टीमेटली हम सब रोटी के लिए तो कर रहे हैं सर, बट दैट वाली रोटी नहीं. रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. पैसा गया हुआ वापस आ जाएगा, समय गया हुआ नहीं आएगा वापस. डू यू एग्री टू दिस? डू यू एग्री टू दिस? समय जो चला गया वो नहीं आता है वापस, और बहुत रिग्रेट लेके आता है बाद में कि यार 5 साल जीवन का दे दिए, सुबह 9 से लेके 9:30 तक लगे, 3:30 तक लगे रहे, और फाइनली कामत बंधुओं को रिच कर दिए. मजाक कर रहा हूँ. आई मीन आई लव देम फॉर व्हाट दे हैव डन, बट फाइनली यू हैव टू सी how much time you are investing and what kind of benefit you are deriving out of that investment of time. If you are not sure about that, you better start working on it. How many of you, honestly, I am asking this question very blatantly, how many of you know your price per hour? आप में से कितने लोग हैं जो खुद का एक रेट जानते हैं कि मेरा प्राइस पर आवर इतना है? अगर इसका मतलब अगर मैं एक महीने में एक काम में 100 घंटे दिया हूं, तो वो 100 घंटे का मेरे को इतना वैल्यू मिलना चाहिए, बिकॉज ये मेरा वैल्यू है. 99% पीपल डोंट नो दैट. और हम बस लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एंड वी डोंट नो द वैल्यू विच वी शुड डिराइव फ्रॉम ऑल द वर्क वी आर डूइंग. तो ये 5वां नंबर पॉइंट है. तो आप ये 5 पॉइंट आज सोचना, ये वीडियो खत्म होने के बाद सोचना कि एक लिख लिया ना 5 पॉइंट. हाँ, आप सोचना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे कि आपको व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन यू वांट टू डू, whether you are ready to become a trader, whether you should start with part-time trading, which I recommend people that start with part-time trading. As you start with part-time trading, you obviously learn more as a part-time trader, and you learn yourself also. क्योंकि हमको तो अपने बारे में भी कितना कुछ जानना है, हम तो जानते ही नहीं. अभी मैं गीता जी की क्लासेस पढ़ कर रहा हूँ, मैं गीता जी की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि यार आई रियली डोंट नो माई सेल्फ. देयर इज सो मच. आई डोंट नो वेदर आई एम रियल अर्जुन और नॉट. इज देयर एनी problem which I have? Until I know whether I'm Arjun or not, I don't know. I will not be able to seek the guidance from Krishna. Anyways, it's a very philosophical बात है, मैं नहीं करूंगा. और but what I'm saying that अपने आप को पहले जानो, उसके बाद में वो marriage between you and the market will happen. The problem is we are not spending time with ourselves. We are not asking these tough questions to ourselves. And then we are just getting influenced by other people, and we are just starting things. Probably that's not the right way. I mean, you can do 920 straddle strategy to kickstart. But eventually, when the market will get tough, when the regulatory changes will come, you will be nervous. अरे यार मैं क्या करूं? lot of people tell me, call me कि सर मेरा क्या होगा, मेरा करियर डेरिवेटिव का लॉट साइज बढ़ गया तो मेरा क्या होगा सर, ये हो गया तो मेरा क्या होगा सर. मैं इनको ये बोलता हूँ कि the problem is that you have not built a solid base for yourself. If it was well built, it is a 50-year career you would have created for yourself. A doctor who practices for 40, 50 years takes 14 to 15 years of education to become a doctor. A lawyer practice for 10 years to become a lawyer, good, successful lawyer. And in trading, you want to do overnight success. You want to just learn for 1 or 2 months and become successful. No, it's a journey which will take time for you to reach.
And if you are willing to take that journey, if you are passionate about trading, if you really think you have it in you, you want to make it a trial, you want to see whether it is something interesting for you, then I suggest you become part of this family. The TMP family, more than 4,000 people are part of this family, and they are just loving the journey of getting in power. What we are doing here is very unique. Shurodeep is teaching people how to understand the language of price, the behavior of the price, the patterns of the price. I'm teaching and mentoring people on relative strength, and I'm making sure that they have the right mindset to trade. Chetan Bhai, uh, I know him since last 17, 18 years. He understands his psychology. He understands how to size, how to not size, options, how to use options to generate the extra alpha. Abhijit Da, I've known him for last 14, 15 years. A very sorted person. A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. He knows that very clearly. And Sanando, someone who understands global markets, global economics, commodity currencies so well. All five of us have come together and created this absolute value for money mentorship program, which will give you that edge to become a successful trader. So if you want to become a lion, if you feel you have it inside you, if you want to give it a try, if you want to experiment, I think this is really one amazing program. I generally don't talk about my courses because I feel what I've done, what I'm doing across the platforms, free and through a lot of effort, it speaks a lot about the effort which we as an organization are putting in. But I think having a structured mentorship program with structured training will definitely add tremendous value in the journey of someone who wants to become a structured trader. So I would suggest connect with us, fill up the form here, connect with us, find out whether this is the program meant for you. And it is only valid for people who really want to become a trader, who really want to experiment. I don't want you to just uh, you know come here for the sake of doing it. No, 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 no. We will figure out whether you are the right fit for this family, and eventually we all grow. And the beauty of this program is that we remain connected forever throughout our life. So if any point of time you ever need us, we'll always be there to guide you in all your endeavors. So join TMP if you really want to. You fill up this form. My team will always be there to help you, and I'll be always there to help you. And in case you need further clarification, you can always ask them. All right. I hope you understood the whole crux of the matter. And there are five aspects which you need to think. पहले उसको क्लियर करो, उसके बारे में सोचो, और उसके बाद अगर लगे कि नहीं ये जर्नी में मुझे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तब फिर टीएमपी टाइप का प्रोग्राम को ज्वाइन करो. ऑलराइट, थैंक यू. चलिए, धन्यवाद. गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस पॉजिटिव रहिए, बिकॉज हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ऑप्टिमिज्म, ये तीनों का कॉम्बिनेशन H2O is the most deadly combination you can keep for yourself till we have the last breath. All right. Thank you. Bye. Good night.